मॉर्निंग सर। मॉर्निंग यार। नमस्ते। स्वागत प्रातःकाल सत्र में। भगवान बुद्ध की प्रातःकालीन वंदना, अर्पणा एवं प्रारंभिक वंदना। सो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो स्वाखातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावक संघो तन्मयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्घम् इमे हि सकारे हि यथारहं आरोपिते हि अभिपूजयाम। वे जो हैं अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध, भगवान के द्वारा अच्छी तरह समझाया गया धम्म, धम्म के मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संग, उन भगवान बुद्ध, धम्म और संघ की हम यथोचित सत्कार से पूजा करते हैं। साधुनो भन्ते भगवा शुचिर परिनिब्बुतोऽपि पश्चिमा जनता अनुकंपमान सा इमे सकारे दुगत पन्नाकार भूते पटिगणहातु अम्हाकं दीघरतं हिताय सुखाय। हमारा सौभाग्य कि भगवान को महान निर्वाण की प्राप्ति के बाद भी आगे आने वाली पीढ़ी पर अनुकंपा थी। आदर पूर्वक दी गई यह तुच्छ भेंट कृपया स्वीकार करें। हमारे दीर्घकालिक हित और सुख के लिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध, भगवान बुद्ध का मैं अभिवादन करता हूँ। भगवान के द्वारा अच्छी तरह समझाया गया धम्म, उस धम्म को मैं नमन करता हूँ।
भगवान के श्रावक संघ जिन्होंने मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित किया, उस संघ को मैं नमन करता हूँ। प्रारंभिक वंदना। हन्दमयं बुद्धस्स भगवतो पुबभाग नमकारं करोमस्ये। आए हम भगवान बुद्ध की प्रारंभिक वंदना करें। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्कार उन्हें जो हैं अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। नमस्कार उन्हें जो हैं अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। नमस्कार उन्हें जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। एक रिफ्लेक्शन करिए। बाहर की गाथाएं। अंधमयं भार सुत गाथायो भड़ामसे। आए हम भार सुत की गाथाओं का पाठ करें। भारा हवे पंचखंदा भार हारो च पुग्गलो। भार आदानं दुःखं लोके भार निक्षेपणमं सुखम। पांच खंड भार है और मनुष्य भार ढोने वाला। इस लोक में भार ग्रहण करना दुख है, भार उतारना सुख। निक्षिप्त्वा गरुं भारं अयं भारं अनादिय। समूलं तनहं अभूय निच्छातो परिनिभुतो। बड़ा भार उतार कर कोई और भार ना ग्रहण कर, तृष्णा को समूल निकाल, इच्छा विहीन निर्वाण को प्राप्त करता है। बुद्ध की प्रथम बोलों की गाथाएं। अंधमयं पठम बुद्ध भाषित गाथायो भड़ामसे। आए हम भगवान बुद्ध के प्रथम बोलों की गाथाओं का पाठ करें। अनेक जाति संसारं संधा विश्वं अनिभ्यसं। गहकारं गवे संतो दुःखा जाति पुनः पुनः।
अनेक जन्मों तक संसार में बिना रुके दौड़ता रहा। घर शरीर के निर्माता की खोज करते हुए बार बार दुख में जन्म लेता रहा। गहकार कृठोसी पुनगे हम न काहसी। सब बातें फासुका भग्गा। गह कोटं विसंखतं विसंखार गतं चित्तं तण्हानं खयम् अजगा। गृह कारक मैंने तुझे देख लिया है। अब पुनः घर नहीं बना सकेगा। तेरी सारी कड़ियां भग्न हो गई है। घर का शिखर भी टूट गया है। संस्कार विहीन चित्त की तृष्णाएं समाप्त हो गई है। Let us settle down in next 2-3 minutes, and then I'll run the audio number 10, which seems to be Chittanupassana from its heading. So now I play the video. The topic is experiencing the mind. To me, it seems to be Chittanupassana. As we attend to mindfulness of breathing,
the different focuses of attention that are possible. It's important to recognize the possibilities, or the different ways, that modes of attention, in that using the body as a basis for attention, using feeling as a basis for attention. All of this is happening within the sphere of this mindfulness of breathing. This is your kind of your baseline, that the mindfulness of the in-breath and mindfulness of the out-breath is sort of your base, your foundation. And from that base, then your direct attention to the body, to feelings, and also to the mind. This is the third tetrad in the discourse on mindfulness of breathing. It's the third foundation of mindfulness, and it's a necessary foundation to be attentive to, because the mind is where we experience things. That's the function of the citta, is where we experience things. That's all the functions of our awareness, cognition, perception, the conceptualizations within the mind, emotions. These are all sort of happening on the mind base, and this is the first step in in this tetrad, experiencing the mind. I breathe in, experiencing the mind. I breathe out. So that recognizing the what is happening within the mind, because we have we experience things within the mind, and more often than not, we don't actually see it or recognize it as this is just the mind. We see it as this is me. There's the assumption of me-ness, mine-ness. And there's whatever mental state or mood is experienced, is then experienced as the this is me, or it's seen as the say the external world that is believed in, invested interest in, and we end up deluded by it. So we spend our time either deluded by the world outside us or deluded by ourselves, our assumption of selfness, of me-ness, and the as Ajahn Chah would oftentimes say, the one who is lost in the world is lost in their moods. One who is lost in their moods is lost in the world. These are there's that
Just that basic confusion, misapprehension of reality. And so the foundation to be able to cut through that and to at least get a beginning toehold on reality is experiencing the mind, recognizing clearly what is the mind, what is going on in the mind. It's like in the Satipatthana Sutta, the Buddha, when he describes the Jittanupasana, the mindfulness of the recollection of the mind, and it's saying there's seeing the mind with desire as the mind with desire, the mind without desire as the mind without desire, the mind with aversion as the mind with aversion, the mind without aversion as the mind without aversion, the mind with delusion as the mind with delusion, the mind without delusion as the mind without delusion. And seeing these fundamental say conditionings of the mind, or the additions to the mind, the defilements of mind, kilesa, and whether they're there or not, whether they're conditioning the mind, because we tend to that is what we take as the mind, is that it's how it manifests itself, and generally we get spun around by greed, hatred, and delusion, and we're not usually aware of when the mind is without greed, hatred, and delusion. So we're not attentive to it, not recognizing, not experiencing the mind in its true nature. So that experiencing the mind, when we really experience it fully, the mind with greed, with hatred, with delusion, seeing, then the direct experience of that is suffering. We see very clearly. As soon as we acquiesce to the mind of greed, of hatred, of delusion, we're also acquiescing to suffering. We're also accepting, welcoming, giving sort of full throttle to suffering. And if we experience that with mindfulness and clarity, then the result would be stepping back from that. It's just, why would we make ourselves suffer? But because we don't experience it with mindfulness, we don't experience it clearly, we don't experience it with this full awareness, then we just sort of bumble along, and that's kind of the story of our lives. So that experiencing the mind without greed, without hatred, without delusion, that has a very opposite effect. When we experience that fully, we really take note of and recognize clearly. This is what the experience of a mind without greed is like. This is what the experience of the mind without aversion, without delusion, this is what it's like. This is what the experience is. This is how it manifests itself. Then the experience is one of just alleviation of suffering, being free from suffering, an experience of well-being, and
and peace, and that is just gives a whole different perspective on say on our human existence, that we can actually live without greed, hatred, and delusion, and it's this is this is really the direction we want to be going in. This is really what is satisfying, and anything else is it's painful. So that these clear recognition of these fundamental forces in the human mind. Also, the Buddha describing the Cittanupassana in Satipatthana, knowing the contracted mind as contracted, knowing the distracted mind as distracted, knowing the exalted mind as exalted, knowing the unexalted mind as unexalted, knowing the concentrated mind as concentrated, knowing the unconcentrated mind as unconcentrated, knowing the developed mind as developed, knowing the undeveloped mind as undeveloped, knowing the liberated mind as liberated, knowing the unliberated mind as unliberated. And so that this understanding the mind, understanding what is going on in the mind, what is the mood of the mind, what is the basic content of the mind, and what its repercussions are. So that we in using this mindfulness of breathing, and just experiencing the mind, I breathe in, experiencing the mind, I breathe out. Starting to really hone in and attend to the mind itself. And we've been laying the foundations of calmness and clarity, mindfulness and awareness, through using using the body, using that, and obviously the breath in its many guises, ways, using the different ways of really relaxing and settling the body, settling the mind, so we can really start to look at the mind itself. And to sort of, it's like peering into sort of the world of our inner experience, and seeing more clearly, what is it that motivates us, what pushes us, what is it that is peaceful and liberating, and what is it that is entangling and painful. And it's the mind that creates that. We can and to take a real interest in your own mind. That's not just sort of relying on theory or what one's heard. One uses those for pointers, but to be really
uh, looking at, well, what is my experience? What do I know about my own mind? Uh, the Larry Rosenberg gives a little story of when he was teaching a kind of an introduction to meditation over a, can't remember, it was like an 8-week period or something. And as an ongoing course that he teaches at the Cambridge Insight Meditation Society. And he had these, and people who, there's many people who joined this course, but there were these 3 professors from Harvard who joined, and 2 of them were actually Buddhist scholars, and there's all of these 3 of them all had sort of PhDs, and 2 of them were Buddhist scholars with their PhDs in Buddhist studies, and one of them was a PhD in political science. He was a Yugoslavian communist, kind of communist Marxist who the only reason, and he thought religion was just for idiots, sort of soft-headed idiots, and the only reason why he was taking the course is because his girlfriend was really interested in Buddhism and was on the course, and then if he didn't come along to the course, then he figured he was jeopardizing his opportunities with his girlfriend. So he was wasn't a particularly noble intention. But by the end of the course, I said these 2 sort of PhDs in Buddhist studies hadn't really sort of made their minds peaceful at all or learned very much about their because they were always looking at, trying to compare it to some treatise or some book or something they've heard from somewhere else, and or they were trying to line it up against the sort of Buddhist Abhidhamma and sort of Buddhist maps of the mind, and they forgot to look at their own minds. Whereas this sort of hard-headed kind of Marxist took a real interest in his own mind, and had some really quite remarkable results, and was very gained a lot of faith in the practice, because he was willing to look at his own mind. So that for ourselves, this is what the practice is about. When we say experiencing the mind, and what comes up? Do we start looking at what such and such a teacher writes about the mind, or such and such a sutta says about the mind, or such and such a theory of mind is in this particular school of Buddhism? Or do we really start to look at our own minds? What is the mind that has greed? What is the mind that doesn't have greed? What is the mind without hatred? What is it like with hatred? How do we experience that? So that really on each in-breath and each out-breath, really being attentive to the mind. What is the mind? What's going on in the mind? What's the feeling? What's the tone? What's the mood? What is it? What's its kind of content? What's it? And that
is really attentive to that. This is where in course Ajahn Chah is very much pushing us in that direction all the time. To be studying the mind. He'd oftentimes say that, just to put away the books and to study the mind. It's to study your own heart, study your own minds. This is what, say, living in the forest, practicing in the forest is very helpful for, because it gives us the opportunity to say, step back from a lot of distractions, external distractions. I mean, we find all sorts of distractions in our own mind, but then we don't have any excuse then. I remember one time, the first year that we went out to Pujamgom, which is a branch monastery on the border of Laos, and it's a very remote area, very simple surroundings, very, very quiet. Probably one of the quietest places I've ever experienced in Thailand. And we went out there. This is the first year that we went out, started the place up, and spending the rains retreat out there. We were asking one of the monks during the retreat how it was going, how the meditation was going, and he says, "Well, I guess it's going great." I said, "I'm not very peaceful, but I don't have any excuses anymore." So that recognizing that there's so often the mind comes up with all its excuses of why it should be distracted or what it needs to be thinking about, and when you're in a peaceful setting, a peaceful environment, and then you realize that that's just more stuff in the mind, and it's sort of mind driven. It's not at all the reality of things, and in actuality, that's pretty much what it's like all the time. We don't need to be filling our minds with greed, hatred, and delusion just for the fun of it, or just because it's some sort of duty or expectation. We take that on voluntarily, and we don't recognize it, we don't see it clearly. So that experiencing the mind, really being attentive to what is that mood in the mind, what is it conditioned by, what's its feeling tone, what are the constituents of it. These are sort of experiencing the mind. The different ways that the mind just gets caught in its distraction or contraction, or even goes to an exalted state, very sublime. Do we just see that as the mind, or do we then immediately add on to it of, my mind is in a contracted state or a distracted state, therefore I am a diminished being. I'm not a worthy person. I'm not a good meditator. Or the mind comes into experiences some sublime
radiance, um, and it becomes extraordinarily peaceful and radiant. And then is that just experienced as mind? Or is it then, wow, I really got it now. I've got the handle on Buddhism now. I'm really getting my meditation together now. I'm a good meditator now. Um, my practice is really good now. Wait till I tell the Ajahn. What? They. Um, or is it just experiencing the mind? Experiencing the mind, I breathe in. Experiencing the mind, I breathe out. So and not getting caught in the additions of who I am, what I am within that. On a certain level, that sense of recognizing more clearly what the mind is. Say, on a certain level, say citta, is a neutral word or base. It sort of has potential for so many things. Say mind. Actually, mind is a good translation of citta, because citta is sort of the kind of the framework, the container, or the space that is then utilized by all the different aspects of mind. But it has this fundamental say potential for awareness, and then there's all the moods of the mind, all the movement of the mind. This is what when Ajahn Chah went to pay respects to Ajahn Mun. This was really the big thing that he came away from his meeting with Ajahn Mun, was the advice that Ajahn Mun gave to start discerning and recognizing more clearly what's the difference between the mind and the moods of the mind. So that there's this fundamental mind base that has its potential of clarity and knowing. And then there's all the moods of the mind, the moods of joy and sorrow, the moods of sort of intelligence and confusion, the moods of the irritation or kindness and compassion. All of these are moods of the mind, moods of the mind, objects of the mind, and underlying that is this sort of fundamental mind base, the mind itself. That is, when we're sitting and meditating and practicing to, as you're breathing in, experiencing the mind and really taking that observation and discernment, to sort of cut through, what's just the mood, the object, the content of the mind, and what is the fundamental mind base? What's the fundamental,
and the experiencing the citta in its simplicity and its openness. Now that is a really coming back to that experiencing the citta and recognizing the citta as that potential. And we have the potential of being very peaceful, unshaken, because that's, in the same way that the images that are often used, like the sky and the clouds, where the sky is just, you have this open blue sky, and then you have the clouds that pass through it. The sun, the moon, they sort of pass through the sky, but behind it all, and we get attracted to the make all the commentary on the clouds, on the sun, on the different things that we see in the sky, and we don't pay much attention to the sky itself. We take it for granted. And similar with the mind, we get attracted to, we get averse to, we get confused by, we get intellectually stimulated by the content of the mind, the moods that pass through the mind, and we fail to direct attention to that mind. The mind of knowing, the mind of that is able to just be present, to be clear, to know clearly. So that experiencing the mind, and this is where it's so necessary to develop the stillness within the mind. The mind is there all the time, and we can take it for granted. We can distract ourselves from it. It's there all the time, but we need to attend to it in a way that we start to appreciate its potential, so that that stillness, if we're always stirring it up, always adding things to it, always proliferating within it, then we fail to recognize its potential. We fail to taste the fruit of the say the potential of the mind. So to the meditation and the developing of stillness, the still, settled, clear mind gives us a window of opportunity to recognize more clearly that potential within the mind. And those developing of samadhi is, it's a necessary part of the cultivation. And the samadhi has conditions, and it has it comes and goes sometimes on a seemingly random basis, but you keep plugging away at it, because it gives us an opportunity to experience the mind, and as we experience the mind, then we can start to recognize, okay, this is mind, and these are the objects of mind. This is the moods of the mind, and the mood of the mind can then be experienced within a framework.
And it can be, when we see that more clearly, then it's so much easier to let go of the moods of the mind, the objects of the mind, the content of the mind. There's again, a tendency of taking the content, the mood of the mind, and either taking it as self. This is who I am. This is me. This is mine. Or taking what is just a mood of the mind and looking on the world, extrapolating it out to the world being pleasant, unpleasant, desirable, undesirable. And it's not because of the world. The world is just sort of as it is. The things outside of us are just as they are. It's us that imbue meaning into it and give value to it through the mind itself, through the mood of the mind. And you see that all the time. Certain situations, or even just on a day-to-day basis, you come down into the meditation hall. And some days you're looking forward to the meditation. Sometimes you're dreading it. What is it the space? Is this the world, the being? It's either dreadful or delightful or whatnot. But it's the mind creating putting the value on it. But it's believable. It is. We keep believing it. Returning to the experiencing the mind. As we just be present with the breath and the awareness of the breath, and then directing it to that sense of what is the mind and what are the moods of the mind. And this citta is there's a lot of interpretations, and there's a lot of it can be pretty confusing sometimes. Sometimes conflicting definitions and ways that it's talked about. But it's just like in that even in the tradition, it's like there's a very well known discourse that where the Buddha talks about this mind being radiant, but it is say defiled by adventitious defilements, stained by adventitious defilements, and then what they talk about, say papasara citta, the mind. This mind is radiant, and then the commentary then goes off in saying, well, the papasara citta, the mind is. This is the kind of bhavanga citta, the sort of the subconscious stream of subconsciousness, and
But in that discourse, the Buddha talks about this. It is stained by adventitious defilements, but it can be purified of those adventitious defilements. But what you can't do much with a bhavanga citta. I mean, it's just sort of it's this subconscious stream that is there. It's not really. It's not really. It's just sort of a force in nature. So it's the citta in that sense is much more the say that potential for a mind of peace, of freedom from suffering. It's a potential. The citta is a container. It's not a fixed thing. Or sometimes when people talk about, say, the pabhasara citta, as if it's this is the kind of like the unconditioned, the mind of sort of the unconditioned, the mind of sort of kind of original mind, sort of thing of the being, the unconditioned mind. But then, I mean, you can't really do much with the unconditioned mind either. That's sort of an end point. And then what would the unconditioned mind be having adventitious defilements coming into it? It's not really part of the picture. So that this the citta is it has its potential of radiance, but it needs to be trained, needs to be purified, needs to be seen clearly for what it is, and seeing that it can experience greed, it can experience non-greed, it can experience anger, and it can experience non-anger, it can experience delusion, it can experience non-delusion. It has all those potentials. It can be distracted, it can be exalted, it can be concentrated, it can be unconcentrated, it can be liberated, it can be unliberated. And it's up to us to experience it so clearly, so fully, that the obvious thing is to allow that which is unsettling the mind to drop away, and to return to the stillness of the mind, its potential to just be the knowing, that base of knowing. So when Tanchukun Dhammapito and Prapayutto defines citta, it's that which receives the objects of the senses and knows them, and the mind being another sense. The mind being another sense, so that there's that which knows and brings it into the heart. That's sort of the citta being the fundamental awareness that knows and knows clearly. So that experiencing the mind, experiencing the citta, experiencing that capacity for knowing, and returning to that knowing, staying with that knowing, recognizing that that's where our refuge of peace is. It's not in
the moods of the mind, the objects of the senses, the world outside us. I mean, it has a, we obviously can't shut it out, and there's no point in trying to negate it, because we just end up spinning ourselves out that way. But having a ground to experience it from, that is the citta, experiencing the citta, experiencing the mind, and not being, say, drawn out into the confusion of Seneca Jadcha, is one who's lost in the world, is lost in the moods of the mind. One who gets lost in the moods of the mind gets lost in the world. And that not being lost in either of those or confused with them, returning to the citta, returning to the knowing. So I'll offer that for reflection this morning.
दिस वाज टुडे सेशन। कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं। If there is any question that can be asked. मैं पूछना चाहती हूँ, सर अवेलेबल है तो एक्चुअली जो मैं कल बात कर रहे थे अजान प्रसन्नो कि जब न्यूट्रल फीलिंग होती है, सेंसेशन है, सो उस टाइम पे देयर इज अ, मतलब उस टाइम पे देयर इज अ, बिफोर इट गेट्स ऑन a perception on that feeling, there is a gap. मतलब थोड़ा टाइम लगता है जब हमारे को उसको बोरियत फील करना या कुछ कुछ उसको नेम करना बेसिकली। और जब हम ये बिल्कुल आता है एक्सपीरियंस में। और आज जब हम चित्त अनुपश्ना की बात कर रहे थे तो जब चित्त का जब हम फॉर्म देख रहे हैं कि चित्त किस तरह में है, जब हमारा चित्त महक्कत है या फिर डिफाइलमेंट से भरा हुआ है या या मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है। सो मैं जानना चाहती हूँ ये डिफरेंस जो है, जैसे हम अ, जब बहुत कॉन्सेंट्रेट फॉर्म मतलब जब फोकस्ड रहते हैं तब तो ये बात बिल्कुल क्लियरली पता चल जाती है कि मतलब तब ये जो परसेप्शन वाला जो पार्ट है वो क्लियर ज़्यादा से समझ में आता है। लेकिन जो महगत या नैरो वाला है, ये वाला जो पार्ट है, ये बात को अ, या तो आप बिल्कुल बैठे हो साधना में तब आप यू कैन रिकग्नाइज हाउ द स्टेट माइंड इज, और एट द बिगनिंग ऑफ इट। तो मैं कहाँ ये चीज़ को अप्लाई करूँ आपकी आपके अपने आप लोगों के अपने प्रैक्टिस में? हाउ डू यू अप्लाई चित्तानुपश्यना, और हाउ डू यू सी दिस एज अ, मतलब कैन यू मेक अ डिफरेंस? और इज न्यू मतलब मैं न्यूट्रल सेंसेशन से थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, कोई मुझे थोड़ा सा समझ में जानना चाह रही हो थोड़ा सा और। आई होप सो आई एम एबल टू say what I'm trying to say, but I जब डेली लाइफ में मोस्टली वी ट्राई टू बी अवेयर ऑफ aversion and craving. Bhagavad is a state of when you are practicing metta and or you are practicing the jhana, immaterial jhana. वो डे टू डे लाइफ में वैसा होता नहीं है। हमारी जो स्टेट है माइंड है उसमें अगर हम डे टू डे लाइफ में अवर्शन जागते ही पता चल जाए अवर्शन जागा है, you drop it. It just gets dropped off. Similarly, craving जागना देखना और मुश्किल होता है। Craving जाग रही है, देख लिया and drop off. So the knowing of craving is the job of sati. सती हमें बताती है कि क्रेविंग जाग रही है, और जो फंडामेंटल नोइंग नेचर है माइंड का वो है द मेंटल मनोविज्ञान। तो we need not get into that also. All that we from practical point of view, day to day life point of view, हमारी सती हमारी एबिलिटी टू बी माइंडफुल इतनी धीरे धीरे इतनी बढ़ी जाती है कि गुस्सा आता है तो तुरंत नहीं तो 10 सेकंड बाद 15 सेकंड बाद या
depending on the sharpness of faculty of sati, one would know the state of mind either within a few seconds or within a few minutes or sometimes within a few hours because they've been totally taken over by Mara. So that is the practice in day-to-day life. On cushion, you can, of course, when you're doing a retreat, then you can see the Bhagavad Chitta, you can see expanded Chitta, you can see Chitta which is radiant and so on. डे टू डे लाइफ में भी अगर द्वेष मालूम पड़ जाता है ड्रॉप हो जाता है विद इन ए फ्यू सेकेंड्स यू फील अ ग्रेट रिलीफ सो दैट इज द इंटिमेशन ऑफ ए purer state of mind, I would say. आ, क्या देखिए सर, जैसे हम न्यूट्रल फीलिंग की बात कर रहे हैं जब हम, और जब मैं महगत चित्त का बिल्कुल क्लियरली पता चलता है कि योर माइंड इज, मतलब एक ओपन टू, एक्सपैंडेड है, ओपन है, बट और फोकस्ड माइंड भी पता चल जाता है। कई कई बार तो बहुत, आप डेली लाइफ में भी पता चल जाता है, मुझे बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं फीलिंग की बात कर रही हूँ और मैं चित्त से उसको रिलेट कर रही हूँ, तो अ, जो न्यूट्रल फीलिंग वाली फीलिंग है, जब आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है, न्यूट्रल फीलिंग की फीलिंग है। मतलब हाँ, मतलब कुछ, मतलब जैसे जहाँ पर राग या फिर कहीं कोई, बेसिकली जो न्यूट्रल फीलिंग वो हुई ना, जो जहाँ पर ना राग है आपको, ना द्वेष है, फीलिंग के प्रति आप हो, यूं ही हो। यू कैन बी That's लॉस्ट, understand from this. यू कैन बी लॉस्ट इन डिल्यूजन, Sorry, sir. कैन बी लॉस्ट in delusion about the neutral feeling. One may not even know it is a neutral feeling. एक state of delusion बना रहता है, indifference बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि न्यूट्रल फीलिंग का इम्परमानेंस जहाँ ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। अगर आप न्यूट्रल फीलिंग का इम्परमानेंस देखना मुश्किल है, तो इसीलिए कहा जाता है उसको देखे बगैर काम नहीं चलेगा, डिल्यूजन नहीं हटेगा। भगवान की शिक्षा में आता है ना, सी द प्लेजेंट फीलिंग्स एज पेनफुल, पेनफुल फीलिंग एज अ डार्ट, as and asukha dukha vedana as a impermanent. So when you put a perception to the neutral feeling, then it is gone actually, है ना? That's ऐसे ही होगा ना सर? It's not necessary, no? I'm just giving a usual general statement. It's not always के आपने राग देखो जागा है, आपने देख लिया और वो चला जाएगा। वो इतना स्ट्रांग हो सकता है कि कुछ थोड़ी देर टिका रहे। नहीं, लेकिन जब परसेप्शन आता है तब तो आपका या तो क्रेविंग आएगी, या फिर आपका देयर सम अनलेस अनटिल हमने वो 10 संज्ञाओं का पूरा एकदम इन डेप्थ हो गया है, उसके पहले की जो स्टेट है उसमें तो यही होता है कि जब आप या तो न्यूट्रल फीलिंग से आपका राग बढ़ रहा है या द्वेष हो रहा है, जब वो चेंज हो जाती है परसेप्शन से, तो देन इट बिकम्स, then there is a change. Obviously when I understand कि जब मैं there is no ending, I cannot make out the ending, but the beginning of the uh, dvesh I can make out, beginning of the rag I can make out, and of course there's no, I can't see the end of it, मतलब जैसे आप सब Depends, no? It depends on the level of practice. And राग जो है वो द्वेष जो है वो न्यूट्रल फीलिंग से नहीं जागते हैं। राग जागता है जब फीलिंग प्लेजेंट हो, द्वेष जागता है जब फीलिंग अनप्लेजेंट हो। न्यूट्रल फीलिंग से राग वाग नहीं जागता।
हाँ, करेक्ट। न्यूट्रल फीलिंग से राग वाग नहीं जागता है। एंड आई दैट आई जब मुझे नहीं होगा, देन आई फील दैट दैट्स अ न्यूट्रल फीलिंग। आई मीन, अगर ये मैं गलत अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज करेक्ट मी, बिकॉज दैट्स हाउ आई सी इट। फीलिंग का मतलब है कि ना सुखद लग रही है ना दुखद लग रही है। हम्म। तो इसको अलग रखना चाहिए। वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश ना। जो नाम रूप विच्छेद है वो ठीक नहीं होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। वी शुड बी एबल टू सी दिस इज वेदना, दिस इज संज्ञा, दिस इज संखारा, दिस इज विज्ञान। ये क्लियरली देखने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मिक्सअप करते रहेंगे। Okay. फिर To be able to distinguish between them. तो वो प्रैक्टिस की बात है। ट्राई टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। So this is the feeling. This is the feeling. This is the reaction to the feeling, and this is the perception. Which either feeling का perception होता है, perception के कारण feeling आती है. That's a investigation to be done. जब हम किसी प्रिय को देखते हैं तो तुरंत फीलिंग प्रेजेंट हो जाती है। किसी एनिमी को देखते हैं तो तुरंत फीलिंग नेगेटिव हो जाती है, अनप्लेजेंट हो जाती है। सो यू कैन सी द फीलिंग एंड द परसेप्शन आर इंटरट्वाइंड। जैसे वो जो है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है उनका आपस का। और फिर प्लेजेंट फीलिंग को देख न पाने के कारण उस पर क्रेविंग जागती है। अनप्लेजेंट फीलिंग को देख न जा पाने के कारण उसके ऊपर द्वेष जागता है। देखना मतलब ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व। If you objectively observe, oh, this is pleasant feeling, the craving will not arise. That is the point of observation. No? But we usually, there is the inclination of the mind. जो संखार है वो बनता है, उसको देख नहीं पाते और वो क्रेविंग में कन्वर्ट हो जाता है या अवर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको याद होगा हमने जब सत्य पठान किया था तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ संखारास के लिए संचेतना कहा गया था। इंक्लिनेशन ऑफ द माइंड, द राइट। टेंशन डेवलप होती है। यस, आई गेट इट पूरा। तो अगर हम पकड़ लें यस। तो फिर वो क्रेविंग या वर्शन में नहीं कन्वर्ट हो पाता। लेकिन जस्ट लाइक ए इंक्लिनेशन ऑफ द माइंड, बट वो बहुत सटल है तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है ना। सो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मोर माइंडफुल वी आर एंड मोर क्लियर वी आर अबाउट द फोर नामखंडास, देन दिस प्रैक्टिस बिकम्स वेरी इफेक्टिव। तुरंत वो आई समटाइम्स आई गेट इट कि मेरा इंक्लिनेशन ही हो गया है ना। कभी कभी तो आप डे टू डे लाइफ में भी पता चल रहा है कि आपकी जिंदगी जो है, मतलब देर इज सम, यू नो, यू टिल्ट टूवर्ड्स, योर माइंड गेट्स टिल्टेड टूवर्ड्स सर्टेन एस्पेक्ट्स, बट द पॉइंट इज, वो वाला जो माइंड है वो आप देख पा रहे हो। अगर आप कुछ कर सकते हो तो देन यू चेंज इट और यू जस्ट पॉज इट देयर। अदरवाइज यू फ्लो, मतलब फ्लो में चला जाएगा अगर ज्यादा, मतलब अवेयरनेस नहीं रहती तो। ये, हाँ। बेसिकली बात है कितना हम अवेयर रह पाते हैं, कितनी हमारी सती स्ट्रांग है। पुट इट इन proper language. Because awareness is a very widely used meaning word with different meanings at different times. So once we use proper Pali word, then we know what we are talking about. जितनी हमारी सती स्ट्रांग होती जाती है उतना ये चीजें हमको क्लियर होती जाती हैं और उनके प्रति रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ये बेसिकली ये बात है, बाकी एवरीथिंग इज जस्ट ए मैटर ऑफ डिटेल। नहीं तो मेरे को जो समझना है वो ये समझना है कि जब मेरी न्यूट्रल फीलिंग है तो एब्सेंस, सॉरी, महागत चित भी तो एक तरह का न्यूट्रल फीलिंग ही है ना मेरा। मैं ऐसा समझ रही हूँ, ऐसा लग रहा है कहीं कहीं तो बहुत अच्छा
एक सुखद, प्योर सुखद फीलिंग है। आप समझ रहे हैं? मतलब ऐसा दिखता है, ऐसा मेरे को। आई डोंट नो, यू हैव टू से। अगर कोई करता है ऐसे समझ में आएगा तो, क्योंकि दैट इज ऑल्सो चेत की ही चेतना ना। और मतलब चेतना ही तो ऑल्सो हैज अ सम फीलिंग ऑल्सो विद इट। Don't use the Bhagavad Gita. सर आपकी Bhagavad आवाज़ मुझे नहीं आ रही क्लियर, शायद मेरे एंड से प्रॉब्लम है। Gita. Kindly don't use the word Bhagavad Chitta so loosely. अच्छा, Bhagavad is a state of mind experienced when we have practicing metta in a very profound way, very deep way. And we have been able to expand it to include whole of the humanity, whole of the cosmos. Then we say, अब वो जो मेहता सहगतेन है ना, उसको पढ़ोगे तो उसमें देखोगे अपमानेन असीम महान चित्तो. So those things are exalted states of mind. Na? So we should not equate neutrality of the feeling with Mahaggat Chitta. वो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी. Neutral feelings can be sometimes they it's like a border कि पता नहीं चलता ये pleasant है कि unpleasant है. Most of the time unpleasant ही होती लगती. But कभी कभी वो it's a bordering a pleasant feeling or bordering a unpleasant feeling that you can बहुत carefully देखोगे तो पता चल जाए. But it's a matter of seeing more clearly. So don't use the word Mahagat, use only within our level of practice, we should use only Sairagama Chittam, Saidosham Chittam, Samoham Chittam. That's it. शब्दों में एक सेकेंड सर, मैं आपको जो कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ, व्हेन यू सी द माइंड इट ऑल्सो हैज अ फीलिंग टू इट ऑल्सो। ऐसा नहीं है ना बेटा. नहीं है Feeling is always कोई, when you हम see. यही पूछना चाह रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज द मोमेंट यू सी अ माइंड, यू ऑल्सो देर इज अ फीलिंग ऑल्सो बीन फेल्ट। ऐसा नहीं है कि वो अकेला आ रहा कैसे आएगा? है। चारों चीजें नहीं यार. नाम रूप इकट्ठा होता है ना, अलग अलग तो नहीं होता. नाम में क्या क्या चीजें आती हैं. नाम में आती है वेदना, वेद, संज्ञा, हाँ, संखारा. संखारा। संखारा इज अ मेंटल phenomenon. No? What is संखारा? So राग द्वेष. which makes it चित्तानुपश्यना एंड वेदनानुपश्यना डिफरेंट है ना? ये अब मैं सही समझी हूँ कि नहीं, आप बताइए। चित्त अलग है, रिलेटेड है, तो इसलिए उसको डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत हो जाती है. तो डिस्टिंग्विश करना हमको सीखना चाहिए. एक फीलिंग होती है, कैसा लग रहा है. एक उसके ऊपर प्रतिक्रिया होती है, मुझे ये पसंद आया तो अच्छा लगा, मुझे बनता रहना चाहिए, और चाहिए और चाहिए, नहीं हम्म, चाहिए नहीं. ठीक है। सामान्य हिंदी भाषा में अगर समझोगी तो आसान हो जाए. हम्म, तो जो चाहिए कि नहीं चाहिए वो राग द्वेष है. उसका आधार वेदना. आधार उसका वेदना ही तो है. हम्म, पूछो बिल्कुल। ना कि बाद में आएगी कि पहले आएगी. वो जी। तो पहले आएगी. दे आर ऑल साइमल्टेनियसली अराइजिंग, तो हमको पता नहीं चलता है. कई बार हम उसको ज्यादा महत्व दे पाते हैं क्योंकि गुस्सा बहुत आ गया तो ये भूल जाते हैं कि गुस्से से पहले बहुत बुरा लगा था. फिर हम सोचते हैं हाँ बुरा लगा था. दैट्स बिकॉज ऑफ अवर लिमिटेशन ऑफ and limitation of a mind not being able to see them simultaneously or not seeing the cause effect properly. So षडायतन पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा. This is the sequence. But this sequence is also actually explanatory sequence. Explanation के लिए दिया गया. हम्म, फर्स्ट वेदना साइमल्टेनियसली राइज होते हैं. हर विज्ञान के साथ वेदना संज्ञा संखार जागेगा. इसलिए कहा गया ना विज्ञान पच्चया नाम रूप. विज्ञान इन्फ्लुएंसेस नाम एंड द रूप. सो वो हमारी अपनी समझ के हिसाब से हम उसको देखते हैं कि अच्छा वेद चित्त जागा तो वेदना भी जागी है. हाँ ठीक, अच्छी बात है. बट वी मे नॉट बी एबल टू सी देम साइमल्टेनियसली बिकॉज इट्स वेरी almost impossible.
for a normal meditator to see that, for me to see it, but I can see the sequence. हाँ, ऐसा हो रहा है, देखो ये जो है इसके कारण जागा, ये जो है इसके कारण जागा, ये इससे इन्फ्लुएंस हुआ, ये मेरा परसेप्शन था, इसके कारण ऐसी फीलिंग हुई, इस फीलिंग के कारण मैं सजग नहीं था तो ये राग जाग गया या द्वेष जाग गया. We can easily trace it back quick immediately. So it's a matter of putting the teaching into practice again and again and again. Neutral feelings are most difficult to feel. भूल ध्यान ही नहीं जाता उनके ऊपर, जब जाता है तो that's what we keep on observing. अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, नहीं कुछ भी नहीं लग रहा, ना अच्छा लग रहा है ना बुरा, नहीं थोड़ा सा बदल जाए तो अच्छा है, इसका मतलब द्वेष जाग रहा है. हाँ, तो ये जो when you see this, when you see this, नो क्रेविंग और अवर्शन, कुछ नहीं जागेगा. your चित्त, then you are seeing your चित्त, ओके ये दे कुछ ना, तो इसमें कुछ नहीं आ रहा है, ये वाली बात आप समझ रहे हैं? जो उसमें आपने फीलिंग, मतलब वेदना को तो अनुभव किया, उसमें ना तो आपने राग देखा ना द्वेष देखा. अब जैसे नहीं तो देखता क्या है, है ही नहीं, राग या द्वेष तो देखेंगे कैसे? तभी कहेंगे वीत रागंग वाचित, वीत रागंग चित्तंग ते पजाना, वीत देशंग वाचित्तंग वीत देशंग चित्तंग. ये कंडीशन ये बताया जाता है ना उसमें कि राग है अब राग नहीं है, अब द्वेष है अब द्वेष नहीं है. So if you are able to observe Vedana at its origin, there is no rag or dvesh. There is no moh, there is no delusion. You're, at that moment, the mind is clear. That is what we are practicing, so that more and more moments our mind is clear. That's all. That would be an equanimous mind. समता, समता, जी जी बिल्कुल. समता का भाव होगा basically. Good, good. Okay, thank you. थैंक यू सर, थैंक यू विशाल जी, थैंक यू एसपी सर. क्लोजिंग चेंज करेंगे. इस पर अगर उचित हुआ तो शाम को भी थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे पूनम जी, क्योंकि चक्षक सुप्त के एंड में भी अविद्या अनुसय को न्यूट्रल फीलिंग से जोड़ा गया था, एंड वी हैड ए नाइस डिस्कशन जब हमने इस पर पैनल डिस्कशन किया था. तो मे बी इन द इवनिंग वी विल सी. नहीं सर, मैं आपसे नहीं, हाँ हाँ ठीक है, ठीक. थैंक यू सो मच निखिल जी. सर मैं आपसे जो, सॉरी मैं ना, मेरे दिमाग में अभी चलता रहेगा थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए. मैं आपको शायद मैं मतलब क्लियर नहीं साउंड कर रही हूँ, या कंफ्यूज लग रहा होगा, लेकिन मैं आपसे आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहती हूँ. मुझे किताब से वाली बात मत बताइएगा अभी. मैं आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहती हूँ. व्हेन यू सी, ऑफ कोर्स यू से दैट देयर इज अ फीलिंग, perception is there when you see your chit. It is inbuilt in it. That's what you're saying. But मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो ये ट्रांजिशन है फ्रॉम सीइंग फीलिंग टू योर चित्त is also kind of चित्तानुपनिषना. Even though अगर सपोज मैं न्यूट्रल फीलिंग भी देख रही हूँ, एंड देर इज अ ट्रांजिशन ऑल्सो, कि ट्रांजिशन फ्रॉम न्यूट्रल, ट्रांजिशन फ्रॉम क्या कहते हैं, फीलिंग टू फीलिंग, इन द सेंस कि मेरे को द्वेषात्मक फीलिंग या फिर मेरे को रागात्मक फीलिंग. उस ट्रांजिशन में भी वो जो चित्त जो देखना है, उस चित्त को देखना, क्योंकि यू सी द चेंज इन द माइंड स्टेट, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ चित्तानुपश्यना क्या? मैं तो वो एग्जाम्पल आपको महगत वाला ऐसे ही वो दे रही थी, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत प्लेजेंटनेस रहती है.
but you don't attach to that pleasantness with that. There's a there's a element of equanimity so much. बट मैं उसको नहीं बात कर रही कि मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये जो चेंज है, इस ट्रांजिशन को, इस चित्त को हम कैसे देख रहे हैं, हमारा क्या देखने का, हाउ डू यू सी इट, दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज. The arising of what is chitta? I mean, you're uh, getting वो जलेबी सी बन रही है. हाँ, चित्त इसीलिए आप. ये यहाँ पे जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, all these processes are happening at the mental level, but we don't say they are chitta. वो definition की बात है ना. That's why definition is important. We say there is a knowing base. knowing base मतलब मनोविज्ञान. अब वो नहीं समझ आएगा तो मैं क्या करूं उसमें. बेसिक तो ये बात है ना. देर इज, जैसे हम आंख है और आंख से देखते हैं, मन है, मन से विचार करते हैं. वो तो फंडामेंटल है ना बेटा. वो जो मेंटल ऑब्जेक्ट आया है उसकी प्रोसेसिंग हो रही है ना. तो उसमें कोई ट्रांजिशन नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, दे आर साइमल्टेनियसली ऑकरिंग. साइमल्टेनियस ना, एक ही समय पे होते हैं वो. हम नहीं देख पाते तो इसलिए हम उसको एक के बाद एक देखते हैं. दैट्स आवर लिमिटेशन ना. तो वेदना को जानना भी मेंटल, वेदना इज ए मेंटल फैक्टर. संज्ञा इज ए मेंटल फैक्टर, ऑफ कोर्स. संखारा इज ए मेंटल फैक्टर. बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ चित्तानुपश्यना, वी आर सेइंग संखारा को देख रहे हैं. अब हम जब हम वेदनानुपश्यना कह रहे हैं, अब हम वेदना को देख रहे हैं. जब हम वो इंस्ट्रक्शन दी थी उन्होंने कि चित्त संखार को देख रहे हैं, तब हम वेदना और संज्ञा को देख रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो तो कोई ट्रांजिशन हो गया. अब हम उस पर फोकस कर रहे हैं अब, क्योंकि हमारे में एबिलिटी नहीं है कि हम सारे साइमल्टेनियसली देख पाए. करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है. फोकस मेरा जहाँ गया, मैंने उसको देखना शुरू करा. फोकस की बात है ना इसमें भी. लेकिन जब मेरे बोलिए. जब आप देख रही हैं तो उसके उसके पीछे के फिनोमेना को भूल नहीं सकते ना. वो भी हो रहे हैं ना. संखार जो है वो वेदना पे जागता है ना. वेदना पचे तन्हा तो हो ही रहा है ना. हाँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी. करेक्ट, हाँ, मैं मतलब मैं देख नहीं पा रही हूँ ऑब्वियसली. मतलब आप देख नहीं पाते हैं कि ये सारी चीजें ऑलरेडी चल रही है पीछे, जस्ट मेरा बदल गया. अगर वो ना हो, अगर हम वेदना को देख लें तो आगे की गाड़ी नहीं बढ़ेगी. तृष्णा तृष्णा नहीं जागेगी. कुछ नहीं होगा. वहीं पे रुक जाएगा. I will be equanimous. There will be no rag, no dvesh, no moh, because you are aware. No राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है. जैसे उन्होंने कहा, equanimous mind, state of mind. That is a intimation of a, for a microsecond or a second, mind is pure at that moment. So you feel peaceful. ठीक. Okay. थैंक Stop. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. पूनम जी, क्लोजिंग चेंज करते हैं. अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि. Thank you, everyone. Thank you, Nikhil. Thank you very much. Thank you, Poonam. Thank you for your